So here's the topic. This thing we had discussed yesterday. In our previous class, we had discussed this thing. So here we had calculated the upthrust. Okay. So how the upthrust can be calculated on an object when it has been submerged in a given liquid. So that we had understood, as well as we had understood the factors on which the upthrust used to depend on. Now we will go for some other things also. So here we are going to see for the buoyancy now. See students, there is a confusion between buoyancy and buoyant force. Many students get confused between these two terms. So don't get confused for these two terms. They are related, but they are different also. Okay. So what is buoyancy and what is the buoyant force? So let's understand for that particular concept. सी जब हम लोग बॉयंसी के बारे में बात करते हैं तो बॉयंसी असल में एक टेंडेंसी या एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी लिक्विड के लिए जो जिसके कारण या जिसके वजह से वो एक अपथ्रस्ट एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है, हम लोगों ने ये समझा है कि अपथ्रस्ट या फिर बॉइंट फोर्स जो है या फिर जो अपवर्ड फोर्स जो है जो लिक्विड के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है जब भी किसी भी चीज को उसके अंदर इमर्ज किया जाता है, तो वो जो जो फोर्स लगाने की जो टेंडेंसी होती है उस टेंडेंसी को कहते हैं बॉयंसी। ओके, so when we go for the property, so that's why I had made a statement for you all. You can see for this thing that the property of a liquid to exert an upward force on the body immersed in it is called buoyancy. So ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी लिक्विड जो है ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है। सिंपल तरीके से अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस बॉय इज विलिंग टू पुट दिस बॉल इनसाइड द वाटर। So when this boy is pushing the ball in the water, he is dislocating the water molecules. Water molecules got dislocated because of the force exerted by the boy. But the water molecules wants to regain their position. So as soon as the boy removes his hand, what happens? The ball gets bounced back at the top. Why? Because the water molecules wants to regain their position. They want to fulfill their place once again. And that situation or that condition makes the ball to jump out over there. And this is the condition which we are talking about. So the tendency of the liquid molecules to put this force in the upward direction is called to be as the buoyancy. Whereas the force which has been exerted by the molecules of the liquid or the fluid is called the buoyant force. So please keep these two things separate. Buoyancy is the tendency, whereas buoyant force is the force exerted by the molecules. Okay, I hope you all had understood this particular thing. What is buoyancy and what is the buoyant force? So they are related. Once again, I'm telling they are related, but they are different from each other. Okay. So next time, whenever you are talking about buoyancy or whenever you are talking about buoyant force, so I hope it will be clear in your mind that what you want to explain or what you want to tell. Okay. Now let's move to the next part for this particular topic or on this particular thing. That when we are talking this buoyancy and buoyant force, then we relate it फॉर द कंडीशन ऑफ सिंकिंग और फ्लोटिंग। यानी जब हम लोग ये बॉयंसी के बारे में बात करते हैं या बॉयंसी से रिलेटेड जब बॉइंट फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में एक चीज आता है कि कब कोई ऑब्जेक्ट सिंक कर जाए यानी डूब जाएगा, कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सी स्टूडेंट्स, दिस बॉइंट फोर्स डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। बॉइंट फोर्स ही बेसिकली बोला जा सकता है वो फैक्टर है जिसके कारण हम लोग ये देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो या तो सिंक कर जाता है या तो वो फ्लोट करता है। तो कब वो सिंक करता है, कब वो फ्लोट करेगा, इस चीज को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो पिछले क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे बॉइंट फोर्स को बता रहे थे, तब हम ये चीज बताए हुए थे कि बॉइंट फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। और साथ ही साथ वहां पर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए हम ये बता रहे थे
कि जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो नीचे की तरफ लग रही होती है, उन दोनों के बीच में यानी पॉइंट फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन के बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वहां पर सिंक होने वाला है या फिर वो फ्लोट होने वाला है। तो इसी चीज को हम लोग और डिटेल्ड फॉर्म में और एलॉबोरेटेड रूप में समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, इसको अब देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, एक छोटा सा चीज जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बॉइंट फोर्स जो है वो अगर बड़ा होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तब हम लोगों ने जाना है कि वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग ये देखते हैं कि बॉइंट फोर्स जो है वो अगर छोटा होता है, सॉरी, ओवर हियर इफ आई जस्ट gone for something else. Okay, just I'm repeating one, correcting this thing. तो पॉइंट फोर्स अगर बड़ा होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तब वहां पर वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करता है, वो ऑब्जेक्ट वहां पर फ्लोट करता है, वो इजीली वहां पर फ्लोट कर सकता है। लेकिन अगर पॉइंट फोर्स जो है वो छोटा हो जाता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तब हम लोग ये देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो वहां पे सिंक कर जाएगा, वो नीचे की तरफ वहां पे डूब जाएगा। और अगर पॉइंट फोर्स इक्वल हो जाता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तब उस कंडीशन में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो पार्शियली सिंकिंग एंड पार्शियली फ्लोटिंग के कंडीशन में आ जाता है। फिर से हम इसको करेक्टेड करके बोल रहे हैं, करेक्ट करके बता रहे हैं। इसको ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट फोर्स जो है वो बड़ा हो जाता है मेरे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो वहां पर ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर हम लोग ये देखते हैं बॉइंट फोर्स छोटा हो जाता है वेट से, तब वहां पर वो सिंक कर जाएगा। एंड इफ द बॉइंट फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन इट विल बी पार्शियली सिंकिंग एंड पार्शियली फ्लोटिंग। सो इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो इस चीज को हम लोगों को समझने से पहले, जब इस चीज को और इलॉबरेटली हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को समझने की जरूरत है आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है और उसको किस तरह से हम लोग रिलेट करेंगे पॉइंट फोर्स के साथ, और फिर पॉइंट फोर्स को रिलेट करेंगे हम लोग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। तब हम लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट सिंक होता है या फिर क्यों कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। ओके, सो टिल हियर इफ देयर इज एनी डाउट, अगर यहां तक कहीं पर कोई भी डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो। यस, डू एनीवन इज हैविंग एनी डाउट टिल हियर? अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो बता सकते हो। Yes, students, no one is having any problem. No, sir. Then we can move to the next slide. Okay, so let's see over here. So I will share the next slide with you all. Okay, let's see. So here we are going to discuss about the Archimedes principle. जैसा कि अभी भी बता रहे थे कि फ्लोटेशन को समझने के लिए, बॉइंट फोर्स को रिलेट करने के लिए फ्लोटेशन के साथ, तब हम लोगों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। सो जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर दिस पेज विथ यू ऑल। एवरीवन, सब कोई देख पा रहे हो ये पेज? लेट्स सी। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को एलॉबरेटली डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? इन अ वेरी सिंपल वे वी कैन से दिस थिंग that Archimedes principle states that when a body is immersed partially or completely or wholly in a liquid, then it experiences an upthrust which is equals to the weight of the liquid displaced by it. Okay, so students, please be very mindful to understand this particular logic. इस लॉजिक को ध्यान से समझने की जरूरत है। जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड के अंदर डिप करते हैं, तो वो लिक्विड उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट एक्सर्ट करती है। कितने अमाउंट का अपथ्रस्ट एक्सर्ट करती है? Equals to the amount of liquid displaced by the object which been immersed in it.
and this basic principle is known as the Archimedes principle. इसी बेसिक से चीज को हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं. वंस अगेन, Archimedes principle states that when a body is immersed partially or completely or wholly in a liquid, then it experiences an upthrust which is equals to the weight of the liquid displaced by it. वो जो फोर्स एक्सर्ट करता है, अपथ्रस्ट एक्सर्ट करता है, वो उस लिक्विड के वेट के बराबर होता है. And once again, when we are talking about the weight is actually force. We had already studied this thing, that weight of an object is actually the force. Okay, so the upthrust experienced by the object when it has been immersed in a liquid is called to be the is equals to the amount of the liquid displaced by the body. ओके, तो ये कैसे होता है, ये किस तरह से होता है, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको हम लोग प्रूव आउट भी कर सकते हैं. तो ये कैसे हो सकता है या क्या होता है, देखो इसमें करना क्या है, हम लोग एक स्प्रिंग बैलेंस लेंगे, एक कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एज पर टू योर चॉइस, एज पर टू योर रिक्वायरमेंट, यू टेक अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट and tie it with a string and hang it to the hook of the balance. Okay, now you may get a particular reading. यहाँ पे तुमको एक कोई particular reading मिलेगा. Say as for example the reading shows over there 20 Newton. Okay, suppose for example it shows 20 Newton. Now what you do, you take this stone and with the spring balance only, you immerse it completely or wholly in this beaker of water, in this beaker. Okay, this is an eureka beaker. Okay, so in the lab we can have this one. So हम लोग लैब में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी करते हैं. तो यूरेका लैब सॉरी यूरेका जो है, यूरेका एक सिंपल सा बीकर है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं. तो इससे होता क्या है कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो कि स्प्लिट आउट होने वाला है उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या करना है, इस स्प्रिंग बैलेंस को इस स्टोन के साथ इसके अंदर डिप कर देंगे. जैसे ही डिप करेंगे वाटर लेवल यहाँ पे रेज अप होगा. जैसे ये यहाँ पे राइज करता है, ये एक्स्ट्रा वाटर जो है वो आकर इसके अंदर गिर जाएगा. ये सारा का सारा वाटर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही हम लोग देखते हैं कि वो कंप्लीटली इमर्ज हो गया है, we will observe this thing that on the balance now it is not showing 20 Newton. Now it is not showing 20 Newton. It may, suppose for example it is showing over there 15 Newton. I'm just taking an assumption. Okay, it is showing 15 Newton. So the question is that how the weight has been reduced from 20 Newton to 15 Newton. How this is possible? This is possible because the stone or the pebble was experiencing an upthrust over here. This stone is experiencing an upthrust over here. Now, if I want to know that how much upthrust is acting over there, so simply I can say that, okay, it's 20 Newton minus 15 Newton, and that is equals to 5 Newton. Okay, that is 5 Newton, means 5 Newton का force जो है वो ऊपर की तरफ apply हो रहा है. अब जो यहां पर वाटर निकला है, तुम इस वाटर का वेट कैलकुलेट कर लो. You will find that it is also 5 Newton. You will find the weight of this water which has been splitted out. It is equals to 5 Newton. So what does this denotes? ये क्या यहाँ पर हमको बता रहा है? ये हमको बता रहा है कि जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को उसमें किसी लिक्विड में डिप करते हैं या इमर्ज करते हैं, तो वहां पर जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके बराबर का ही अपथ्रस्ट वो एक्सपीरियंस करता है. ठीक है, तो ये जो अपथ्रस्ट है, ये अपथ्रस्ट अगर इतना काफी होगा उसको बैलेंस करने के लिए, तब तो वो वहां पे रोक लेगा. लेकिन अगर वो उतना काफी नहीं होगा, then the object will sink down. We will understand that one later in the later part of this lecture. We will see for this one right now to just understand the Archimedes principle. ये जो assumption बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ Archimedes principle को satisfy करने के लिए कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा, इस चीज को तुम लोग कई सारे अलग अलग एग्जाम्पल से भी तुम देख सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल while you are in the school and your school bag is on your shoulder,
You feel the weight of your bag. Okay, now suppose for example, uh, your friend came from the back and put a force in the upward direction on the bag. What do you feel over there? You feel very light in weight. Okay, or a little bit less weight on your shoulder. Why it is so? It is because your bag is feeling an extra force. The bag is experiencing an extra force, and this extra force is allowing the bag to reduce its weight. So you are getting lesser weight on your shoulder because your friend is putting a force in the upward direction. So in the same way, you can understand over here also, when the object was hanging in the air, it was having a certain amount of weight. But when it been immersed in this liquid, then the liquid had exerted an upward force. Because of this, the weight has been reduced down, and the reduced weight is due to the upthrust. So how much upthrust is acting, that is equals to the reduce in actual weight. यानी वेट में कितना एक्चुअल में डिक्रीज हुआ है, वो चीज हम लोगों को बता सकता है अपथ्रस्ट. यस स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट ओवर हियर? यहाँ पे देखो, कहीं पे कोई डाउट है बताओ. If you are feeling any kind of question, or if you are willing to ask any question, if you are not getting any particular statement. Yes, are you all getting this thing, Archimedes principle? If you are having any confusion, you can feel free to ask. Yes or no? No. So all of you had understood this thing, because this is a very important thing, because on the basis of this one only we will be able to understand the law of flotation. So when we will go for the law of flotation, then this basic logic is going to be implemented, because over there we will observe that how can we displace more liquid, because more liquid displace, if we will displace more liquid, we will experience more upthrust. If we will displace less liquid, we will experience less upthrust, and due to this one, the condition of flotation will be affected also. Okay, so if you all had understood till here, then it's very good. If you haven't understood, I would recommend that you please go and revise once. Okay, so the experiment is given in your book also. You can go through that one also, and if you get any kind of trouble, or if you are not able to understand any particular topic, then you please feel free to ask me. Okay, now let's understand once again. The upthrust is equals to the weight of the liquid displaced. यानी जो अभी अभी हम बता रहे थे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पर कि जो अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, जब उसको किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं, तो वो इक्वल होता है उस अमाउंट ऑफ लिक्विड के जो कि उस ऑब्जेक्ट ने डिसलोकेट किया है, यानी उस ऑब्जेक्ट ने वहां से उसको हटाया है. तो कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस चीज के बारे में, और उसी इक्वेशन से ही हम लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं. तो कल हम लोगों ने अपथ्रस्ट को कैलकुलेट किया था. कल कल हम लोगों ने इसी इसी सेम फिगर के बेसिस पर, इस सेम फिगर के बेसिस पर हम लोग इसको कैलकुलेट करके लाए थे. तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम एलॉबोरेट किए हैं, उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा हम और ज्यादा एलॉबोरेट किए हैं, और उससे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये अपथ्रस्ट जो है वो उस वेट ऑफ द लिक्विड के इक्वल हो सकता है. ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहला चीज जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, या कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब फोर्स एक्ट कर रहा है इस कंटेनर के ऊपर, जब हम लोग इस तरह के कंटेनर को लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं, तो एक फोर्स एक्ट करता है इसके अपर सरफेस पे, एक फोर्स एक्ट करता है इसके बॉटम सरफेस पे, और इन दोनों का जो डिफरेंस लेते हैं, ये हम लोगों को बताता है इस पूरे होल बॉडी पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. So if you will go for the calculation of F1, then this is the equation which we had done yesterday also. And if we will go for F2, then this would be the equation as over here. Now, when we will go for the difference of this F2 and F1, as the H2 is greater than H1, thus we will go for F2 minus F1, and that would be the force of buoyancy. We would get this thing, which we had already understood yesterday. यहां तक हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया था
कि जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट जो है वो इक्वल्स टू हो जाता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहीं पर हम लोगों को चेंज करने की जरूरत होती है। तो जब हम लोग वॉल्यूम, इस फॉर्मूला को देखो, यहां पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स कैन बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, जो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, वही इक्वल हो जाएगा लिक्विड के डिस्प्लेसिंग से। कितना लिक्विड वहां पे डिस्प्लेस हो रहा है, इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फिर density of the liquid will be density of the liquid over here, acceleration due to gravity and acceleration due to gravity over here. So when you will go for the sum, the product of this density and volume, you will get the mass of the liquid displaced, and the acceleration of due to gravity is already there. And when you will go for the product of this mass of the liquid displaced with the acceleration due to gravity, ultimately you will get the weight of the liquid displaced by the submerged part. Okay, so this is little bit twisted. I will not say that it's very easy, but if you will focus, if you will put your mind when on a particular point, you can be able to easily identify this thing. I'm not going to elaborate a lot of things today, because otherwise you will get confused. I will keep the class till here only, so that you all can revise till here. Okay, so that you can understand. I want you all to understand this particular concept, that the upthrust which is experienced by the object is equals to the weight of the liquid displaced by the body. That has been only been explained by the Archimedes principle. Okay, and as I said earlier, also again I'm repeating this thing. If you will not understand this basic concept, if you are not understanding this basic concept, you will not be able to understand the law of flotation. To understand the law of flotation, this Archimedes principle is very important. Okay, so I will request everyone that you please go through this whole explanation. You go through this mathematical term which I had done over here. This is not given in the book. This has not actually been given in the book. This I had made the equation. You just do this equation by your own, and you think that what does this means. And when you will understand this particular concept, then we can easily go for the law of flotation, and there will be no problem to understand that thing. Is it clear? Is it clear for everyone? Yes, sir. So I hope that you all will go for this thing. So as I said, I will not go for something else. I will keep the class till here only, so that you all can revise till here.